Students, we are on exercise of chapter number 12. We have done the vocabulary words as well as the comprehension question. Now we are on the third question of this exercise, which is also related to the vocabulary section. Let's see the question. The question is, consult a dictionary to find the meanings of given words. Sluggish, quiver, animate, panorama, beyond, dormant, manifold, convolutions, kaleidoscopic, Epicurean, impending. So the first word is sluggish. Sluggish means lacking of energy. The next is quiver. Quiver means tremble or shake with a slight rapid movement. थोड़ी सी मूवमेंट के साथ जो ट्रम्बल क्रिएट होता है, जो शेक क्रिएट होता है, उसको हम क्विवर कहते हैं. एनिमेट मीन्स हैव अलाइव और हैविंग लाइफ, जो चीज़ जिंदा होती है उसको हम एनिमेट कहते हैं. पैनोरामा, अ कंप्लीट सर्वे और प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी कि वाइड रेंज ऑफ एंगल से जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, दैट इज पैनोरामा एंगल. बॉयंट, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक थिंग को बॉयंट कहते हैं हम. डॉर्मेंट, टेम्परली इनएक्टिव चीज को हम लोग डोरमेंट कहते हैं. मैनीफोल्ड मींस मैनी एंड वेरियस, बहुत ज्यादा चीजें जब होती हैं. कॉन्वोल्यूशंस, अ कॉइल और ट्विस्ट और समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज कॉन्वोल्यूशन. कलेडोस्कोप, हैविंग कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स. एपिक्यूरियन, अ स्कूल ऑफ थॉट विद अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ टू स्पेंड लाइफ. इम्पेंडिंग मीन्स समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, जो कि आने वाला होता है, उसको हम impending कहते हैं. So students, I hope you understand these word synonyms. Let's move to next exercise. Hope you understand this one.